وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الصحابة غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلام دائمين بدوام الملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. Allah subhanahu wa ta'ala, He allows believers to get elevated in status through worshipping Him Azza wa Jal. And the greatest status that we're able to achieve is to be an abd of Allah subhanahu wa ta'ala, is to be the servant of Allah Azza wa Jal. Ranks and stations towards Allah subhanahu wa ta'ala are only worthy if they are attached deeply and vastly to the worship of Allah subhanahu wa ta'ala and reliance upon Allah Azza wa Jal. We as the ummah of the Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, we live in a day and age where globally we are witnessing how individuals who are believers and they profess to La ilaha illallah, their treatment that they are receiving or what they are going through and the trials and tribulations that they are going through is only but the reason that they want to call themselves the abds of Allah subhanahu wa ta'ala. The root of it is this. The root of it is this, that they are believers, hence they are going through these trials and tribulations. When the Prophet sallallahu alaihi wasallam spoke about trials and tribulations of this ummah, and in the day and age that we're living in, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam made it very clear that there will come a time, ek aisa waqt bhi aayega, there will come an age that you as believers, Muslims globally, will be pounced upon. आपके ऊपर ऐसा हमला होगा मुसलमानों के ऊपर, as if hungry people are pouncing upon a table and they are ripping that food and eating it. जैसे सदियों से भूखे लोग खाने को किस तरह नोचते हैं, तो तुम्हारा सुलूक इस तरह होगा. एक ऐसा वक्त आएगा और आज हम हमारे आंखों के सामने देख रहे हैं. Today we're seeing this ourselves. Even if we personally are not being treated in this manner, members of this ummah are being treated in this manner. ये उसी उम्मत के लोग हैं. They are Muslims, they are believers, and they are specific to this trial and tribulation that they are facing, that the Prophet spoke about. हुजूर ने बता दी, पहले से बता दिया हमें, हुजूर ने बताया हुआ है. Sadaqa Rasulullah, और नबी ने सच कहा है. The Prophet has spoken the truth. If you look around the world today, the natural disasters that this world is going through, the physical trials that human beings are going through, the spiritual trials that believers are going through, every single one of us here, we've got our own trial and tribulation with Allah. Every single one of us here have got our own worries and anxieties with Allah subhanahu wa ta'ala. All of us have a yearning within us. Every single one of us. चाहे आप बड़े हैं या छोटे हैं, whether you're young or old, मर्द हैं या औरत हैं, man or woman, regardless of who you are, every single one of us, we all have our own worries and our anxieties and our trials and tribulations. Is it not? We all have this. وَلَكِنْ هَنِيئًا لَكُمْ, glad tidings for you, who, about whom Allah has said, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. That your Lord will test you. Allah will test you in every sense of the word. Allah is going to test you in your health, in your wealth, in your livelihood, in your family,
everything. Allah will test you. And then glad tidings for those who are patient. खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिन्होंने सब्र किया. الذين إذا أصابتهم مصيبة, वो लोग जिनके सामने मुसीबतें आई, those people when they were faced with trials and tribulations, قالوا, they said, إنا لله وإنا إليه راجعون, हम अल्लाह की तरफ से ही आए हैं और उसी की तरफ हमें लौट कर जाना है. Glad tidings for them. कौन लोग हैं ये लोग? उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा, ये वही लोग हैं. They are those people who receive salvation from their Lord and receive mercy from their Lord. अल्लाह ताला की तरफ से रहमत. ये वो लोग हैं जो अल्लाह की रहमत को पालेंगे. व उलाइका हुमुल मुहतदून, और ये वही लोग हैं जो कामयाब हो जाएंगे. आपने क्या गौर नहीं किया, तारीख नहीं पढ़ी? अल्लाह ताला ने हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाई है. Allah has given us all intellect. Allah subhanahu wa ta'ala has given all of us abilities. Have you not read in history? Have you not heard? क्या आपने कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं? सदियों से हम सुनते आ रहे हैं. करबला मुअल्ला में क्या हुआ? What happened in Karbala? Who were those people? Who were they? Who were they? Ahl al-Bayt al-Nabi, the household of the Prophet. The Prophet's grandsons, whom he used to call his own sons. रिश्ते में तो थे नवासे रसूल के, लेकिन रसूल ने उनको हमेशा अपने क्या कहा कि ये मेरे बेटे हैं, उनको अपना बेटा कहा. इमाम आली मकाम सैयदना हुसैन इब्न अली, जिनके मुताल्लिक हुजूर ने इरशाद फरमाया, about whom the Prophet said, हुसैनु मिन्नी व अना मिन हुसैनन अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैनन. हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करता है. ये वो लोग हैं जिनके मुताल्लिक नबी ने खुद ने इरशाद फरमाया, अल हसन वल हुसैन सय्यदुश शबाबैन अहलिल जन्ना, कि हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं. They are those people who've been praised by the Prophet, his grandsons, his sons, his Ahl al-Bayt. The Quran speaks about their purity. इनकी पाकीज़गी तो खुद रब बयान फरमाता है. इनका वो मकाम जिनका नाम लेने से अल्लाह ताला हमसे आफत और बलाओं को दूर फरमाता है. ये वो लोग हैं. लेकिन उनके ऊपर भी मुसीबतें आई कि नहीं? इम्तिहानात से गुजरना पड़ना कि नहीं? Did they not receive? और ऐसी मुसीबतें आई, हम सोच कर हैरान हो जाएंगे. By contemplating and thinking about the trials and tribulations they went through, the best of people to walk upon the earth after the prophets and messengers, the Sahaba, the Ahl al-Bayt, what they went through, every single one of them. The household of the Prophet, the Sahaba, you look at their lives, look at what they went through. Yet did they ever derail from the deen? क्या उन्होंने कभी दीन का रास्ता छोड़ा? क्या उन्होंने अपनी नमाजों का भी तर्क किया? क्या उन्होंने कभी ये सोचा कि भाई ये मुसीबत आ गई है, आज अल्लाह की इबादत नहीं करनी? ला, बल्कि मुसीबत जब भी, मुसीबतों का सामना होता, जब भी होता, ये तो ज्यादा सजदे फरमाते, अल्लाह के सामने झुके हुए ही नजर आते. Whenever they were faced with trials and tribulations, they would only increase in servitude to Allah. They would only worship Allah more. They would turn to Allah more. And they would recognize, they knew and understood and affirmed it within themselves that this has come from Allah and to Allah is my return. There is no one but Allah who can remove this from me. No one. No one. देखो, गफलत में जब इंसान पड़ जाता है ना, you know, when a human being falls into a state of ghafla, they start looking for answers to their trials and tribulations from those individuals who can neither bring them any good nor do them any harm. माफी फायदा, फायदा है ही नहीं. गफलत में जब इंसान पड़ जाता है ना, तो मुसीबत परेशानी के उनके सामने झुका हुआ नजर आता है कि जिनमें ना आपका कोई फायदा है, ना कोई खैर है, ना कोई शर है. तुम्हारी मुसीबतें दुनिया के सामने झुकने से कभी तुम्हारी मुसीबतें दूर नहीं होंगी. अगर तुम्हारी मुसीबतें कभी दूर होंगी तो रब के फजल से होंगी. और मुसीबतों का सामना जब करना पड़े, अगर सब्र चाहते हो तो सब्र भी अल्लाह की तरफ से ही आएगा. लेकिन सब्र करने का मतलब ये नहीं, बीइंग पेशेंट डज नॉट मीन कि जो हो रहा है आज मुसलमानों के साथ उसके मुताल्लिक हम ये कह दें
कोई बात नहीं, अल्लाह उनको सब्र दे देगा। नहीं, ला 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 नहीं, बल्कि सब्र करने का मतलब ये है कि वहाँ जो हो रहा है इसके बदले में हम किसी बेगुनाह इंसान का कत्ल हम नहीं करेंगे, लेकिन उन लोगों के लिए हम अपनी आवाज़ें उठाएंगे। We will raise our voices for them. और फिर अगर हमें मुसीबतों का सामना करना पड़े, सो हो, हम जिनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं ना, वो भी अल्लाह वाले हैं। But those individuals whom we raise our voices for, they are the people of Allah subhanahu wa ta'ala as well. They are the people who are beloved to Allah. ये अल्लाह के महबूब बंदे हैं। मुसीबतें अगर किसी के ऊपर नाजिल होना, when trials and tribulations come down on anyone, our pious predecessors, the likes of Sayyidina Habib Abdullah al-Adruz, rahimahumullah ta'ala, wa ghayraha, and others, what they used to say? Glad tidings for them, they're going through a trial and tribulations. खुशकिस्मती है इनके लिए, हाँ, इनके नसीब अच्छे हैं, क्यों मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, क्यों इसके बदले में अल्लाह ताला अगर उन्होंने सब्र किया, वो अजर अजीम अता फरमाएगा कि हमारी अकल से बाहर है। That which Allah will bestow upon them, the rewards Allah will give them for being patient, is beyond our comprehension and beyond our understanding. هَذَا عَلَامَةُ الْمُؤْمِنِينَ. This is the sign of a believer, that in the face of trials and tribulations, ارجع إلى ربك ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. अपने रब की तरफ रुजू हो जाओ. Turn towards Allah. Ayyuhal khullan, my respected brethren, my brothers and sisters in the deen, if in today's day and age we still have not realized, we still have not understood what it means to be a believer, what it means to be a Muslim, that this deen and our life is based upon sacrifice. If even today we're in a state of ghafla where we are not willing to worship Allah subhanahu wa ta'ala kama kana haqqahu, as it is his right to be praised and worshipped, we're going to be destroyed, and Allah will replace us with people who are better than us. This is the reality that we're facing. There are people who are being slaughtered who want to worship Allah, and nothing is stopping us from worshipping Allah. Yet we're not leaving our beds and the comforts of our homes and our houses and standing before Allah, unwilling to say Allahu Akbar when the rest of the world sleeps. When the rest of the world sleeps, when it's dark outside, and you stand and you worship Allah subhanahu wa ta'ala, what are you doing in reality? You're bringing light into your grave. This is what you're doing. And if this worldly life was somewhere you were supposed to sit and live a life of comfort, you've not understood what it means to be a believer. मुसलमान तो वो थे जिनके पास दुनियावी माल थोड़ा था, इबादत ज्यादा थी. और आज का मुसलमान, हादा हकीकत, दिस इज रियलिटी, आज का मुसलमान कि दुनियावी माल इतना है खुद गिन नहीं सकते, इबादत का कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं इबादत का. नवाफिल तो दूर की बात, नवाफिल एक्स्ट्रा वर्शिप तो छोड़ दो, फर्ज का कोई ठिकाना नहीं. और फिर हम सोचते हैं, and then we're thinking and contemplating, why are we facing what we are facing? There's always two positions. There's always two positions. Two. Number one, if you're a believer, you will be tested. Ya Allah ka wa'da hai. This is the promise of Allah. And then Allah will give you patience. Allah will give you the ability to go through whatever you're going through. At the end of Surah Al-Baqarah, Allah makes His promise to us. رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ. We've been taught to supplicate and call out to Allah, "Oh Allah, do not bestow upon us that which we are not able to bear." So the fact that Allah has given it to you, you have it within you to bear it. And then the Prophet ﷺ, whenever he was faced with adversaries, what was the first thing he done? What was the first thing the Prophet done? Turn towards the Qibla, Allahu Akbar. He would stand before Allah. When the Prophet was faced with anything, any calamity, any adversary, any trial, any tribulation,
we will turn towards Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Is it not? Read the seerah. Read Ahadith al-Nabawi Sharif. And what do? When we're faced with trials and tribulations, we turn towards vices, which will only provide temporary relief. And when that disappears, we fall into the trial even more. Mentally, we start losing it. Because we've turned towards a temporary cure. But the permanent cure lies with Allah. The permanent cure lies with Allah. Only Allah subhanahu wa ta'ala. Turning towards Allah subhanahu wa ta'ala is trying to make yourself content with what Allah puts you through. Hence, these days and nights that are preferred over others towards Allah subhanahu wa ta'ala, Allah gives us an opportunity in such days and nights to turn towards Him and ask from Him. What we have just done, Allah accepted from all of us. On behalf of ourselves and our families and the whole ummah, Ya Rab. Ya Rab. We're asking from Allah subhanahu wa ta'ala. We ask Allah to accept it from us and let us taste the benefits fi dunya wal barzakh wal akhirah. In this world, the barzakh and the hereafter. But this should be a regular practice of the believer. Regularly we should be turning towards Allah. जब भी मुसीबत का सामना करना पड़े, मैं हदीस से आपको एक नुस्खा सिखाऊं, इंशाअल्लाह इसके ऊपर आप अमल करेंगे, तुम्हारी मुसीबतों को, आफत को, बलियात को दूर होते हुए पाओगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कहीं न कहीं से तुम्हारे लिए सबब पैदा फरमा देगा. Nothing is impossible for Allah. Nothing is impossible for Allah. Allah is musabbibul asbab. Allah finds ways and means for everything to come about. Subhanahu wa ta'ala. Turning towards Allah, doing rak'atayn, 2 rakat parke. Facing towards Qibla and calling out to Allah subhanahu wa ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakeel. 450 times as per the hadith of the Prophet. Hasbunallah wa ni'mal wakeel. Hasbunallah wa ni'mal wakeel. Hasbunallah wa ni'mal wakeel. Hasbunallah. And then doing dua, calling out to Allah. Sarkar ke barg mein durood salam parke, phir Allah se mango. Send benediction, salutations upon the Prophet, then call out to Allah. Ask from Allah subhanahu wa ta'ala. Ask from Allah azza wa jal. और आप अपने आप को सब्र करते हुए पाओगे. You will find yourself becoming a person of patience और फिर वो मुसीबत दूर होती हुई नजर आएगी. Allah subhanahu wa ta'ala ने हर शय का, every single entity, उसका जवाब अपने कलाम के अंदर रख दिया. Allah has placed the answers of every question, every trial and tribulations within His word, the Quran al-Kareem, or Ahadith al-Nabawi Sharif, or upon the tongue of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Which is why when we call out to Allah azza wa jal, whenever we call out to Allah subhanahu wa ta'ala, we are in line with Quran and Sunnah. Because this is what Allah subhanahu wa ta'ala wants from us. So on nights such as this, turning towards Allah, this is what Allah wants from us. This is what it means to be an abd of Allah. This is what it means to be a servant of Allah. Yet Shaitan has put many a Muslim into a state of ghafla, heedlessness. Shaitan ne balbalon ko phasa diya. Balbalon ko phasa diya. क्यों? शैतान ने दिलो दिमाग के अंदर ये बात डाल दी कि तू इतना गुनहगार सियाकार, तेरी तौबा कभी मंजूर नहीं होगी. इतने गुनाह तूने किए, तेरी तौबा कभी मंजूर नहीं होनी, तेरी कभी मगफिरत नहीं होगी. और फिर उसी सोच में बंदा तौबा ही नहीं करता. और तौबा और इस्तिगफार करने की फजीलत सिर्फ ये नहीं कि तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश होती है. तौबा और इस्तिगफार, अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह, दिन रात कहने से अल्लाह ताला तुम्हारी परेशानियों को दूर फरमाता है. अल्लाह ताला हर सवाल का जवाब तुम्हें अता फरमा देता है. Allah finds a way out for you in every single matter. Purely by saying astaghfirullah, 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 astaghfirullah. To undermine the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, the fuqaha have said this itself is a strain of not believing in Allah as Allah has the right to be believed in. Because you've undermined the mercy of Allah. So whenever you turn to Allah subhanahu wa ta'ala, turn to Him foremost,
having complete trust in Allah. Complete trust in Allah. The likes of Sidi Abu Madian, Ghawth Abu Madian, he never worried about his rizq. Ana mali fiyash, hasha alayya minni, natalaq min rizqillash, wal khaliq yarzuqni. I have nothing, मेरे पास कुछ है नहीं, मोटे की नहीं मोटे. Ana mali fiyash, hasha alayya minni, natalaq min rizqillash. कुछ है ही नहीं मेरे पास, लेकिन रिस्क की कभी मैंने फिक्र नहीं की. क्यों? मेरे खालिक ने अपने जिम्मे ले लिया कि मेरा रिस्क वही देने वाला है. कभी अपनी रिस्क की, he never worried about his meal for tomorrow or the next meal that's coming, what's he gonna eat, this, that. La, never worried. Complete and utter trust in Allah subhanahu wa ta'ala, because Allah has already promised this for you. Whatever Allah has ordained for you, you will eat that before you die. And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he reminds us that, do you not think your Lord, Allah subhanahu wa ta'ala, the one who provides for that bird, who leaves its nest hungry, yet it returns with its own rizq in its mouth. If Allah can look after that bird, do you not think your Lord is going to look after you, the one who follows his beloved Prophet, the one who believes in his Rasul, the one who's a Muslim, a believer, relying upon Allah. अल्लाह के ऊपर भरोसा करना कि गुनाहों की बख्शिश अल्लाह करेगा, गुनाहों को माफ़ फरमा अल्लाह करेगा, मुसीबतों को दूर करने वाला अल्लाह है, मेरे रिस्क का मालिक अल्लाह है, मेरी दुनिया अल्लाह के हवाले, मेरी बरज़ख अल्लाह के हवाले, मेरी आखिरत अल्लाह के हवाले. इसी का मतलब है कि तुम अब्द हो. और अगर किसी शय के अंदर तुम्हें शक व शुबा पैदा हुआ तो तुम अब्दुल्लाह नहीं हो, अब्दुल दुनिया हो. तुम अब्दुल दुनिया कौन लोग? दुनिया कमाने के लिए अपने इबादत को भी छोड़ देते हैं. दुनिया कमाने के लिए इबादत को छोड़ देते हैं, इबादत को ज़रूरी नहीं समझते, इबादत को तर्क कर देते हैं. They leave their worship, they undermine their worship, they put it to one side. Why? They need to work, they need to. Who has given you the ability to work? भाई रिज़्क़ कमाने में तुम्हें ताकत किसने दी, तुम्हें अकल किसने दिया? ये हाथ पैर जो तुम हिला रहे हो रोज़ी कमाने में, किसने दिया तुम्हें? अल्लाह ने ही दिया ना. तो तुमने ये फैसला कब कर लिया कि तू रोज़ी कमा रहा है? ना, तू मेहनत कर रहा है, रोज़ी वो दे रहा है. मेहनत करना हमारा काम, मेहनत करना ज़रूरी. और ये हुजूर ने हमें इतना हसीन तरीक़ा समझाया, सिखाया कि हुजूर ने खुद ने किया. The Prophet done it himself, that he used to go out and earn a living and then leave it to Allah. He used to leave it to Allah, which is why in the mornings, सुबह के वक्त हुजूर फज्र से पहले, फज्र की नमाज से पहले जो दुआ फरमाते थे ना, अल्लाहुम्मा हाज़ा दुआ व मिनकल इजाबा व हाज़ा जुहद व अलैका तुकलान व इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. ए अल्लाह, ये मेरी दुआ है, कबूल करना तेरा काम. ए अल्लाह, ये मेरी मेहनत है, मैंने तेरे ऊपर छोड़ दिया, मेहनत का नतीजा तेरे ऊपर मैंने छोड़ दिया, तेरी तरफ से मैं आया हूं, तेरी तरफ मुझे लौट कर जाना है. Every moment of the way, Allah. And as soon as that sits in your heart, जब तुम्हारे दिल के अंदर ये बात बैठ जाएगी ना कि अल्लाह की तरफ से हम आए हैं, उसी रब की तरफ हमें लौट कर जाना है, तो दुनिया की मोहब्बत कभी तुम्हारे दिल के अंदर नहीं बैठेगी. ये दुनिया जो हम देख रहे हैं, जो सजी हुई है, ला इलाहा इल्लल्लाह, this world that we're seeing, you know, the beautiful lights of the world, this, what is it? Jungle concrete. This jungle that we're seeing is made of concrete. ये पत्थर का जंगल है, ये पूरी दुनिया है कि नहीं? बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है. ये क्या है? ये क्या है? What is this? जीनतुल हयातिद दुनिया. बस दुनिया के लिए एक जीनत है. It's only beauty for the eye. You take it in for a while, हा मजा आ गया. बे वो भी मिटेगा, तू भी मिटेगा. वो भी फना, तू भी फना. और बाकी क्या रहेगा? जो आमाल तूने किए.
only that will remain, those deeds that you performed. The deeds that you, only that will remain. Only that will remain. तो दुनिया के पीछे जो लोग भागते हैं ना, the more you chase the world, the more Allah subhanahu wa ta'ala will put you in a position that you become dependent upon the world. And the more you want to chase the pleasure of Allah, Allah will make the world chase you. जब तुम अल्लाह की तरफ भागते हुए जाओगे ना, ये दुनिया तुम्हारे पीछे भागते हुए आएगी. जब तुम अल्लाह के हो जाओगे ना, अल्लाह ताला दुनिया को तुम्हारे पीछे भेज देगा कि इसके पीछे जाओ, इससे फायदा निकालो, इसमें तुम्हारा फायदा है. There's benefit in this person from you. Go after this person. क्यों? वो बंदा अल्लाह की तरफ भागता हुआ जा रहा है, दुनिया की परी ही नहीं. तो अल्लाह ताला ने अपनी दुनिया को इसके पीछे लगा दिया कि बे मुझसे फायदा चाहते हो, ये मेरा बंदा है, इसके पीछे जाओ. और अगर दुनिया के पीछे भागोगे ना कि दुनिया कमानी है, दुनिया कमानी है, दुनिया कमा, अल्लाह ताला तुम्हें और भगाएगा कि भागो भागो, लेकिन उसकी हद फिर कोई नहीं होगी. There's no limit to it. तुम भागते ही रह जाओ और अचानक फिर मौत आ जाएगी. और अगर इस हालत में मर गए, if you die in that state, remember, hadith में क्या है? What's in the hadith of the Prophet? You know the state you die in, that's the way you're going to be treated when you wake up on the day of judgment. जिस हालत में तुम मरो ना, the state you die in, you will wake up in the same state on the day of judgment. That state, if you died in a state chasing the world, क़यामत के दिन जब फरिश्ता सूर फूंकेगा, और हकीकत है ये, this is a reality that the world wants to take out of your heart. And this is a branch of our faith that the world wants you to forget it. When the angel blows the horn, फरिश्ता सूर फूंकेगा, तुम उठोगे, इस हालत में मरे कि दुनिया के पीछे भाग रहे थे, भागते रह जाओ, भागते क़यामत के दिन. और फिर वहां फरिश्ते तुम्हें पूछेंगे, क्या ढूंढ रहे हो, किसके पीछे भाग रहे हो? वो दुनिया जिसको तुम ढूंढ रहे थे, वो दुनिया तो खत्म हो गई, फना हो गई, फना हो गई. और अगर अल्लाह की रजा के पीछे तुम भागते रहे, अल्लाह के दीन के लिए, for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, then on the day of judgment you will wake up chasing the pleasure of Allah. और फरिश्ते कहेंगे, आओ इधर, तेरी रब की रहमत इधर है, your Lord's mercy is here, तुम्हारी रब की रजा यहाँ है, the pleasure of your Lord is here. हनी अल्लाकुम, glad tidings for you अय्युहल खुल्लान. देखो, रब की रजा के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं ना. Every single one of us, we're here for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. We're chasing the pleasure of Allah. Our intention is to chase the pleasure of Allah. Upon this night, Laylatul Nisf Sha'ban, Allah make us amongst those people that we die in a state where we're only chasing His pleasure. And we're to make up on that state. And we dealt with the people of Allah. And the Imam of the people of Allah, Sayyidina Rasulullah, Sayyidul Anbiya wal Mursaleen, Imamul Muttaqeen. Imam, he is the Imam of the people of Taqwa, Sayyidina Muhammad, Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Qa'iduna wa qa'idukum, Nabiyuna wa nabiyukum, Habibuna wa habibukum, Habibu Rabbul Alameen, Sayyidul Mursaleen, wa huwa Shafi'ul Mudhnibeen, Yawm al-Jaza, lana wa lakum, likulli khalqin ajma'een, wa huwa qal. He himself said, Ana awwal shafi'in wa mushaffa'. I am the one to intercede on the day of judgment, whose intercession will be accepted. I am the one to intercede. Rasul, the Prophet. Going after the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala foremost means staying within the boundaries that have been set by Sayyidina Muhammad, Sallallahu alayhi wa sallam, and trying to move away from the way of the Prophet and wanting to earn the pleasure of Allah. There is no way. There is no way to Allah except through Sayyidina Muhammad. This is the promise of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah has promised this. Allah ka wa'da hai. Allah ka wa'da hai. And so those people who try to take you away from the remembrance of the Prophet, question them. Is there anyone else who is the beloved of Allah except him? Is there anyone else who's going to intercede on the day of judgment except him? Who are you trying to take me away from? About whom Allah has said, Rahmatul lil alameen, wa huwa Rabbul alameen. Is there anyone else? Today we have believers
who tried to take you away from the remembrance of the Prophet in the name of protecting the deen. Aina deen bila Muhammad? Where is the deen without Muhammad? Muhammad is the deen. Sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi sallam. And this Prophet is the one who has promised us the likes of this night, the likes of the first night of Ramadan, the likes of Laylatul Jum'ah, Thursday night. Call upon Allah and your Lord will answer you. Your Lord will answer you. There is no way to Allah except through Sayyidina Muhammad. Huwa miftahu babi rahmatillah. Huwa miftah al-babi rahmatillah. He is the key to the door of the mercy of Allah. Allah ki rahmat chahte ho. You want the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Uqsum billah, I swear by Allah, find it in every corner of the earth without Muhammad. Find it. You'll keep searching. पागलों की तरह ढूंढते रह जाओगे, रहमत नहीं मिलेगी. और नबीना मोहम्मद का नाम ले लो, अपने नबी मोहम्मद का नाम ले लो और अल्लाह से मांगो. Then call upon Allah. देखो रहमतों की कैसी बारिशें होती हैं, कैसी रहमतों की बारिशें होती हैं. ये वो नबी हैं जिनका नाम लेने से मुसीबतें टल जाती हैं. He is that prophet. और सबसे बड़ी मुसीबत कौन सी है? सबसे बड़ी मुसीबत मेरे लिए, आपके लिए, पूरी मखलूक के लिए, for the whole of creation, which is the greatest trial and tribulation, Yawm al-Qiyamah, the day of judgment. Is it not? Do you not fear the day of judgment? क्या क़यामत से तुम्हें डर नहीं है? क्या क़यामत के बारे में तुम सोचकर तुम हैरान नहीं हो जाते? Does your heart not shake thinking about the day of judgment? Hani allakum, glad tidings for you कि दुनिया में जिन लोगों ने उस नबी से ताल्लुक रखा, क़यामत में तुम उन्हीं के साथ हो. और जो उनके साथ होगा, उदखुलुल जन्नत बिस्सलाम, उदखुलुल जन्नत बिस्सलाम. ये वो रसूल हैं कि दुनिया में जिनको याद करने से क़यामत में वो तुम्हें पुकारेंगे कि आओ आओ, आज मैं तुम्हारी शफात कर रहा हूँ, आज मैं तुम्हारी शफात करूँगा. हादा हबीबुना मोहम्मद, हादा नबीना. और उसी रसूल ने हमें सिखाया, समझाया, बताया. दैट प्रॉफिट. सुने, आप अहलुल जन्ना होना चाहते हैं? डू यू वांट टू बी फ्रॉम द पीपल ऑफ जन्ना? डू यू वांट टू बी? आई वांट टू बी. डू यू नॉट वांट टू बी? जन्नती का मतलब क्या? टू बी विद द प्रॉफिट, टू बी विद द रसूल. नाम हादा जन्ना, रसूल की सोहबत. जन्नत में अगर रसूल की सोहबत मिले, ये वो जन्नत है. रसूल के बिना कोई क्या जन्नत है? मेराज के रात का वाक़या का नहीं सुना आपने? हुजूर जब तशरीफ़ लेकर जाए तो जन्नत अपनी किस्मत पर रक्स कर रही थी कि आज वो आए हैं, वो सुवे लालाज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, तेरे दर से जो यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं. ये मत करो, वो मत करो, तुम लोगों को मना करते रहो, हम उनका जिक्र करते रहें. Calling upon Allah subhanahu wa ta'ala with the wasila of Sayyidina Muhammad salawatu rabbi wa salamun alayhi wa ala alihi. If you make a habit of this in this world, in the hereafter, remember, the way you live your life, that is the way you are in the hereafter. Make a habit of this here, in the hereafter, you will be calling upon Allah Azza wa Jal, and then the Prophet will call you. Aha, Rasool tumhe bhulaenge. The Prophet will call you. क्यों? पूरी जिंदगी उनका जिक्र करते रहे, उनके गीत गाते रहे, उनके बताए हुए तरीके के ऊपर चलते रहे, अहले जन्नत होने की कोशिश करते रहे. When the Prophet sallallahu alaihi wasallam said to Sayyidina Amr ibn As about Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas कि जाओ, Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas ने हुआ min अहल जन्नत, वह अहले जन्नत है. Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas हुआ min अहल जन्नत, वह अहले जन्नत है. Sayyidina Amr ibn As, he says, كيف هو أهل الجنة? How is the people of Jannah? Prophet sallallahu alaihi wasallam says to him, go, spend one night in his house, you'll find out why. Go. Sayyidina Amr ibn As went. Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas घर में बैठे और सोचने लगे. He now started to think, रात को जब पूरी मदीना शहर पूरा सो जाएगा, पूरी दुनिया सो जाएगी, ये उठेंगे, वुज़ू करेंगे, तहज्जुद पढ़ेंगे, फिर सहरी करेंगे, नफली रोज़े की नियत करेंगे, फिर मस्जिद जाकर नमाज पढ़ेंगे. सैयदना अमर इब्न आस इसी आस में बैठे रहे.
बैठे रहे, पूरी रात बैठे रहे। रात आई, रात गई, सैयदना बिलाल ने अजान दी, हैया अलल फलाह, आओ खैर की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ आओ आओ। सैयदना सआद उठे, वुजू किया, he performed ablution, and he says to Sayyidina Amr ibn As, come on, let's go to the masjid. Sayyidina Amr ibn As, in a state of bewilderment, हैरान हो गए, I didn't see you get up and pray tahajjud. ना आपने तहज्जुद पढ़ी, ना आपने सहरी की, ना नफली रोज़ा रखा, लेकिन नबी ने आपके बारे में किसे कहा कि ये जन्नती है, हो मिन अहलिल जन्ना। तो सैयदना सआद इब्न अबी वक़ास ने इरशाद फरमाया, look at the understanding of the companions of the prophet. क्या कहा? जिस नबी ने बताया ना, उन्हीं से जाकर पूछो। The prophet who told you that I am from the people of Jannah, उन्हीं से जाकर पूछो कि क्यों, why, मैं नहीं जानता। सहाबा भी जानते हैं कि दुनिया में बैठे बैठे नबी तुम्हें बता देंगे कि तू जन्नती है या जहन्नमी है, समझे? हाँ, और ये किसी मौलवी का फतवा तो नहीं है, ये तो हदीस से साबित है क्या नहीं? दुनिया में बैठे बैठे कयामत आई नहीं, हिसाब और किताब हुआ नहीं, मुंह देकर बता दिया ये तो जन्नती है। ये कौन सा इल्म है ये? What knowledge is this? That the day of judgment hasn't even happened. People haven't even been distributed into the Ahlul Yamin wa Ahlul Shimal. And the people of the right and people. The Prophet looks up and says, you're from the people of the right, you're going to Jannah. Masjid Nabawi Sharif pahunche. They reached the masjid. And then Sayyidina Amr ibn As, he asked the Prophet, Huzur se pucha, Ay Allah ke Rasool, yesterday, Messenger of Allah, you said to me that Sa'ad is from the people of Jannah, but I didn't see him perform any extra worship. What reason is that you called him from the people of Jannah? And the Prophet said, ask Sa'ad, what does he do before he sleeps? सोने से पहले ये क्या करते हैं? पूछो सआद से। सैयदना सआद इब्न वक़ास said कि रात को सोने से पहले अगर मेरे दिल में किसी भी मुसलमान के खिलाफ हसद है, मैं अपने दिल से निकाल देता हूँ। अगर मेरे दिल में किसी मुसलमान के खिलाफ बुग़्ज़ है, अदावत है, फसाद है, रात को सोने से पहले मैं निकाल देता हूँ, माफ़ी तलब करता हूँ अल्लाह से, अल्लाह तू मुझे माफ़ फरमा, आज मैंने मुसलमान के बारे में बुरा सोचा, सिर्फ सोचा, कुछ किया नहीं, सोचा, अल्लाह माफ़ कर दे, मेरे दिल को पाक कर दे। युतहिर क़ुलूबना व क़वालिबिना, purify my heart and our hearts. They used to supplicate for the purification of their heart before they slept. The Prophet said, this is the reason you are going to Jannah. Having a pure heart, पाक दिल, कि किसी भी और देखो फ़ुक़हा ने क्या इरशाद फरमाया, तो फ़ुक़हा have said ये सिर्फ मुसलमानों के लिए न करो, हर कोई इंसान के लिए, for every human being, try not to hold anything in your heart against anyone, and then you will find, your life is much easier. तुम्हारी ज़िंदगी आसान है, क्यों? कच्चे में करो चंदा खोटी व्याधि ना यानवटे वे फेमस है आओ कोई बना आओ सियो खोटी व्याधि आई ज ना हनवटे, दिल में किसी के खिलाफ कुछ रखा ही नहीं है, फोकट की परेशानी कहाँ से आएगी मियाँ, कैसे आएगी? अगर किसी चीज़ की परेशानी है तो सिर्फ इतनी, ए अल्लाह तू राज़ी हो जा, और तुम्हारा रब कह रहा है आओ मेरी तरफ, फिर देखो मैं अपनी रज़ा तुम्हारे ऊपर किस तरह नाजिल करता हूँ। Come towards me and see how I bestow my pleasure upon you. We ask Allah subhanahu wa ta'ala that upon this night, Laylatul Nisf min Sha'ban al-Mu'azzam, Allah Azza wa Jal forgives and pardons every single one of us. We ask Allah subhanahu wa ta'ala through His majestic name, Jalla Jalaluhu Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah has mercy upon us. And Allah subhanahu wa ta'ala removes our trials and tribulations.
Allah subhanahu wa ta'ala doesn't make us rely upon any creation except that we rely upon Him subhanahu wa ta'ala. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to cure all of those who are going through illnesses, Ya Rabbal Alameen, Zahiran wa ma batinan, Ya Akram al-Akrameen. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to forgive our deceased, and He rains His mercy and forgiveness and pardoning upon their graves, Ya Rabbal Alameen. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to widen their graves. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to make the graves into the gardens of paradise. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to send His divine help to the Muslims of Gaza and Palestine, Ya Rabbal Alameen, Wal Askalan, Ya Rabbal Alameen. Allah subhanahu wa ta'ala aid them. Ya Allah, support them. Ya Allah, rain your mercy upon them. Ya Allah, those who hold animosity and hatred against the believers and against the people of Palestine, specifically, Ya Rabbal Alameen, if guidance isn't written for them, destroy them, Ya Rabbal Alameen. Make them turn against one another, Ya Rabbal Alameen. Paralyze the evil intentions towards the believers, Ya Rabbal Alameen. We ask the same for the Muslims of Yemen and Kashmir and Iraq and Pakistan, wal Hind, wal Afriq, wa man ahlu la ilaha illallah ajma'een. Ya Rabbal Alameen. You are the only protector. We ask for your protection, Ya Rabbal Alameen. We ask for your mercy and forgiveness, Ya Rabbal Alameen. There is no one but you who we can turn to. We turn to you sincerely in this hour, Ya Rabbal Alameen. Upon this night, Ya Rabbal Alameen. Nadra ilayna, Ya Rabbal Alameen. Nasalak Allahumma ya basit al-yadayni bil-atiyya, Ya Akram al-Akramin, wa Ya Arham al-Rahimin. Fi nisfi laylat al-Mubarak, Ya Rabbal Alameen. Nadra ilayna, Ya Allah. Nadra ilayna, Ya Allah. Nadra ilayna, Ya Allah. Nadratan رحمة كاملة يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت جواد الحليم وأنت نعم المعين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى يا قوي يا متين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإخوان والمسلمين في بلد العراق والفلسطين وفي اليمن والبحرين وفي باكستان وفي الهند وفي الأفريق ومن أهل لا إله إلا الله أجمعين. اللهم احفظنا وإياهم من كل بلاء والوباء. اللهم اشف مرضانا المسلمين، اللهم ارحم موتانا المسلمين، اللهم توفنا مسلمين وأدخلنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم يا قاضي الحاجات، يا دافع البليات، يا حل المشكلات، ويا منزل البركات، ويا كافي المهمات، يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين. اللهم يا مفتح الأبواب، اللهم يا مسبب الأسباب، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، اللهم يا غياث المستغيثين، اللهم يا دليل المتحيرين، اللهم يا مفرح المحزونين. أغثنا إلهنا، أغثنا يا غوثه يا رباه، أغثنا يا غوثه يا رباه، أغثنا يا غوثه يا رباه. يا الله يا الله يا الله يا الله، ندعوك لا ندعو سواك إلهنا، يا إلهنا يا إلهنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، ولا تضرب به وجوهنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين. اللهم بارك لنا في أوقاتنا، وبارك لنا في شعبان، وبارك لنا في هذه الليلة المبارك، وبارك لنا وبارك مسلمين في هذه المجلس يا رب العالمين. اللهم اغفر للحاضرين، اللهم اغفر للغائبين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. اللهم يا فتاح وافتح لنا فتوح العارفين، خاصة المسلمين في هذا البلد يا رب العالمين. اللهم انصرهم يا الله، اللهم احفظهم يا الله من كل بلاء والبلوى والوباء يا رب العالمين، بجاه سيد المرسلين، بجاه شفيع المذنبين، بجاه رحمة العالمين. اللهم ارزقنا توبة قبل الموت، وراحة وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة بلا حساب ولا كتاب يا رب العالمين. اللهم ارزقنا شفاعة حبيبك سيدنا محمد، اللهم ارزقنا شفاعة حبيبك سيدنا محمد، وادخلنا معه يا رب، وادخلنا جنة معه يا رب، وادخلنا جنة معه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه نبيك حبيبك عبدك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك حبيبك عبدك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، بسر قد كافاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري يا الله، فلهذا سري أتوفي
في يساري وأساري يا الله. أنا عبد صار ضمن فخري واضطراري يا الله. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله. يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي الله، وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي يا الله. فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا الله. يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى اصطباري يا الله. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله. يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يا الله. يهزم العسر ويأتي بالذي أرجو جميعا الله. يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا. قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري يا الله. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. فلم أزل بالباب واقف ارحم ربي وقوفي الله. وبوادي الفضل عاكف أدم ربي عكوفي الله. ولحسن ظني لازم فهو خلي وعليفي وأنيسي وجليسي طول الليل والنهار يا الله. قد كفاني علم ربي الله. حاجة في النفس يا رب فاقضها يا خير قاضي. حاجة في النفس يا رب حاجة في النفس يا رب فاقضها يا خير قاضي. وأرح سري وقلبي من لظى الشواذ في سرور وهبور. وإذا ما كنت راضي فالهنا والبست حالي وشعاري ودثاري. قد كفاني علم ربي فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. صلى الله على محمد.